Hello 8th class students. Today we will do the next part of our lesson number 2 using formula on text on page number 19. We can also perform addition on characters and string data type. Means as you know we are doing this one addition on numbers only, but if we want that we want to join two words. String means string क्या होता है? Group of words. If any word is like book is a string in the you can say in the wording of और in the dictionary of computer में हम word को string कहते हैं. Okay, so if you want that two characters can be add like a plus c, तो ac बन जाएगा. And the same way string means if you want to join two string like you want to give Amit plus Rana, तो join होके दोनों क्या बन जाएगा? Amit Rana. So okay, so if we want to apply formula on text for the addition, then we can, it is also possible in Excel. Except for addition, other operators like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed on the string data. Means we can only add two strings, add two words. We cannot do subtraction, multiplication or division on that. The emphasis symbol, this and symbol is used instead of plus. We are using this emphasis symbol is used to perform addition. Addition of two or more text values called concatenation. Concatenation means to join. अगर हमने दो वर्ड्स को जोड़ना हो आपस में तो उस टर्म को हम बोलते हैं concatenation, and we are using this symbol and symbol. Let us understand with the help of example. For example, you have written in the box A1 and B1. A1 में आपने लिखा किप्स और दूसरे में लिखा B1 में इंडिया. उसके बाद आपने बीच में एंटर द फार्मूला किया इज इक्वल टू A1 एंड B1 इन द सेल C1 एंड प्रेस द एंटर की. यहाँ पे आपने किप्स लिखा, इंडिया लिखा और यहाँ पे दोनों को उसने ज्वाइन कर दिया. एंड इफ़ यू वांट टू स्पेस बिटवीन दैम, अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेस भी चाहते हो, देन व्हाट यू विल डू, you will write here A1 and the emphasis sign again, then double quote space, double quote start again, and then B1, then it will give result keeps the space India. So let's do it practically also. I will open Microsoft Excel on my computer, then we can do this one in practically also. Let's see, in A1 cell we will write here like keeps, and here we will write India, and here you write the formula is equal to kips and this emphasis sign and India, then press the enter key. Wait, so what is the mistake? You can see from here how they have written. They have written like kips is equal to A1. Sorry, I have to write the cell numbers here, so I will write here cell numbers, not that one, sorry. I will write here A1 and that is, this is the B1, B1 cell. Okay, then press the enter key. So in this way it will add the numbers. And second one we have seen here, it is like this way. We have to write is equal to A1. If you want to give space like this one, I want to copy or this one text, right click, we can copy. It is not copying from here. Okay, so we can use A1 and double quote start space double quote and then B1. So we can also do here practically keeps, यहाँ पे हम लिखेंगे A1 and we can give space here with the double quotes space double quotes again emphasis sign and then B1 and then press the enter key. In this way now you can see here space is also coming. Okay, so in this way we can use the text, we can do concatenation on the by using the formula on text. So we are using this emphasis sign. Keep in mind, not plus sign, we are using emphasis sign only. We can do addition on the text, but we cannot do subtraction, multiplication or division, etc. Now we'll see how we can select a range, cell range. What is cell range? Basically when we write anything in the Excel, like we type anything, like I have typed here, if I want to select this one,
then what we'll do, then we will write anything like I want to, मैं कुछ भी लिख देती हूँ like 89 90 67 45 67 and I want to select this range. What I will do, I will select it by shift or arrow key, or you can select it by mouse. So when we select this one, this is the range. What is the range name? From the C5, this is cell C5, C column 5 number row, C5 to C10 I have selected. So this is in the shape of rectangle. This is called a cell range. So cell range is a group of contiguous cell. Contiguous means लगातार जो एक साथ ही सेल सेलेक्टेड हो, जैसे यहाँ पे आपने एक साथ ही सेल सेलेक्टेड किए, ये दिस इज कॉल्ड अ सेल रेंज. एंड विच फॉर्म द शेप ऑफ रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल की शेप लेते हैं जब व्हेन वी आर सेलेक्टेड. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 cells और एज ए बिग सेल्स और एज एन एंटायर वर्कशीट, या फिर ये पूरी की पूरी वर्कशीट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और यू कैन से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इतना सेलेक्ट कर लिया. सो वट एवर वी हैव सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली इट विल, लाइक हमने इतना सेलेक्ट किया. ओके, आई हैव सेलेक्टेड लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो जितना आप सेलेक्ट कर लोगे. और यू कैन सेलेक्ट बाई कंट्रोल ए द होल वर्कशीट. सो दिस इज द, इट विल बिकम मेक द शेप ऑफ रेक्टेंगल. नाउ we will see, you can specify a range by writing the starting cell address followed by ending the cell address, both are separated by colon. For example C1 to C10. अगर आप C1 से C10 तक select करना चाहते हो, you can write like this way also. or indicates the range starting from C1 to ending C10. means this ratio shows that we have selected the cell from the C1, C means C column first row, C column 10th row. Selecting a range. So click on the first cell in the range, and while holding down the left mouse, drag it or last cell, and click, or you can click on the first and hold down the shift key, and you can press allow to extend the selection, or select the first range of the cell and press F8 key to extend the selection by using arrow keys, or to stop extending the selection press F8 key. So there are different ways to select the cells. You can select the cells by selecting pressing the shift key also. Okay, you can use the cells by pressing the shift key also, or you can drag with the mouse also. In that way you can select the range of the cells. Like if you want to select this range, you can select like this way. Okay, or if you want to select, आप थोड़ा थोड़ा select करना चाहते हो, then you can press F8 key. which key? F8 key, and then you select up to where which you want to select. तो जहाँ जहाँ आपने select करना है वो सेलेक्ट होता जाएगा. आपने F8 की प्रेस किया तो जहाँ जितना आपने सेलेक्ट करना है उतना उतना आपका सेलेक्ट होता जाएगा. जहाँ जहाँ क्लिक करोगे इट विल सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. इफ यू, अगर आपने वो सिलेक्शन हटानी है देन अगेन यू हैव टू प्रेस द F8 की. सो डू इट प्रैक्टिकली. नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग रेंज इन द फार्मूला. तो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया दिस वन, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड प्रेस द F8 की. यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सेल लाइक फर्स्ट सेल, देन प्रेस द F8 की टू एक्सटेंड द सिलेक्शन बाय यूजिंग द एरो की. फिर एरो की से आप जितनी मर्जी सिलेक्शन आगे पीछे कर लो. उसके बाद अगर आपने उसको स्टॉप करना है देन यू कैन प्रेस द F8 की अगेन. यूजिंग अ रेंज इन द फार्मूला, टाइप द डाटा एज शोन इन द फिगर, क्लिक ऑन द सेल B एंड टाइप फार्मूला इज इक्वल टू सम B2 to B7. तो आप फार्मूला जब सेलेक्ट करते हो तो व्हेन यू सेलेक्टिंग दिस वन देन ऑटोमेटिकली रेंज विल कम हियर. So this is using a formula, and then press the enter key. So like if you are writing the formula, आप कोई भी sum करते हो, for example when I am writing here is equal to sum, यहाँ से मैंने sum लिया, then it will, देखो C5 से C10 तक अपने आप उसने range ले ली. So it will select the range by itself, then we press the enter key, it will give the total accordingly. Now we will see नेक्स्ट नेमिंग अ रेंज. हाउ वी कैन गिव अ नेमिंग अ रेंज मीन्स किसी रेंज को हम नेम भी दे सकते हैं. लाइक दिस रेंज C1 जो भी आपकी रेंज है यहाँ पे B2 से लेके B7 तक. इफ़ यू वांट टू गिव नेम टू दिस रेंज देन दैट डायरेक्टली दैट रेंज नेम यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस वन B2 to B7. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस रेंज का नाम यूनिट दे दिया, यूनिट सॉलिड, देन नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया है कि इस यूनिट रेंज की जगह पे आपने उस रेंज का नाम लिख दिया. Now we will see how to make this range. Let's understand practically on the Excel sheet. See on your book page number
This is your page number 20 and 21. So we'll also open this one, page 20 and 21. Naming a range. For this, first what we have to do, we have typed some range. I will type one range, कोई भी मैं range type कर लूँगी. For example, I have written here, यहाँ पे जैसे ये range select है आपकी, okay. यहाँ पे I will delete this one. You select this range and you want to give the name to this range. Okay, you select the range and then you will have to go in the formulas tab. Go in the formula tab. In the formula tab you can select define names. There's one option define names, and this name define name, when you click on the define name, click on define name option. यहाँ पे आप define name पे click करोगे. Okay, when you click, this one box will come where you write the name of your, like here it is written units underscore sold, हम सिर्फ unit ही रख देते हैं. Okay, then click on the OK button and see it should be selected. कौन सी range select है आपकी, वहाँ पे अपने आप को reference आ जाएगा, means it should be selected before writing the name of any. Then click on OK button. Then when you click on the OK button, now new name dialog box appears. You have given the names. Now we will use this one range. अब next ये हो गया आपका range का नाम आपने दे दिया. Okay, so again see, select the range. Okay, select the range and then which range you want to give. Then click on the formulas. In formula define name, here you will give the name. So already I have given units name, जो आपने name देना है यहाँ देखिए. Then click on OK. So this is the method to naming a range. Now we will see how to using the naming range. अब इसको use कैसे करना. So we will use it how. Let's see, click on the cell जहाँ पे आपने इसको use करना है. We will click in that cell. Now use in the formula option in define name group. So use in formula name, यहाँ पे आ जाएगा आपका. यहाँ पे आपने कौन से यूज़ करना है, दिस वन. हमने इसका नाम यूनिट रखा था, सो यूनिट विल कम, सो इट विल शो हेयर एंड देन वी विल राइट द ब्रैकेट्स हेयर. यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लोगे, सॉरी हेयर वी विल राइट, सॉरी, फंक्शन सम and then we will apply the brackets and then we will write use in formula unit and then we will close the bracket and then press the enter key. So that unit means वो range उसने अपने आप, it will automatically take the name of that range which we have made. Okay, so in this way we can use naming a range. So next we will see in the next lecture cell references and its types. So up to here students, also you will do its practical. Thank you.